Hello students, welcome to our JEE Advance 2026 एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हम लोग आज इसमें और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चंस है। और इसमें जो चार क्वेश्चंस है, one is the from differentiation, another three questions from the definite integration, which was the most important topic for the JEE Advance। और इस बार रुड़की बना रहा है तो क्वेश्चंस कैलकुलस हर साल कैलकुलस एक वैल्यू रखता है जो कि मोस्ट वेटेज क्वेश्चंस रहेगा। तो इसमें हम लोग पहला जो क्वेश्चंस लिखे हैं, तो पहला क्वेश्चन का जो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos x माइनस 3 sin x बाई अंडर रूट 13 देन dy बाई dx इज कितना है। तो ये जो क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल का क्वेश्चंस है। उसमें हम लोग हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और एक बात बोलता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं वो बेसिक से एडवांस लेवल तक है, जो कि एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हम आगे भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ऑल ओवर द ईयर एवरी वीक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द जेई एडवांस 2027। उसमें हम हर वीक में एक क्वेश्चंस उसके बारे में डिटेल्स स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कि when this questions comes, so what type of strategy we have to follow। सो आज के जमाने में यूट्यूब में हो ऑफलाइन में हो बहुत सारा ओजी टीचर्स नाम दिया जाता है। मैं ओजी टीचर है उसके पास पढ़ने से टॉप रैंकर होगा, ऐसा मैं कभी भी नहीं मानता हूँ। अभी सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स खुद चाहेगा, खुद वो करके इवॉल्व होगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होने वाला है। बुक्स हैव important role in the preparation of students towards the JEE main or advanced। Most important, book has most important role। Teachers have the important role, also equally important role। बट ऐसा नहीं कि एक रिमोट एरिया में स्टूडेंट रहने वाला एक स्टूडेंट वो जेई एडवांस में टॉप रैंकर्स नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं एक चीज बोलता हूं कि जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उनमें से जितना बच्चे जाते हैं हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और कितने का सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग बताते नहीं, जिसका सिलेक्शन हो गया बताते हैं। तो मैं बोलता हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोलता हूँ, हमारे क्लास में भी मैं बोलता रहता हूँ कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने से जो वो स्टूडेंट टीचर के पास पढ़ता था वो टीचर का गलती है कि उस टाइप का स्टूडेंट का जो फॉल्ट है, जहां पर लैकुना है, वो उसको सामने नहीं बता रहे ड्यू टू क्राउडेड। मैं बोलता हूं जहां प्रिपरेशन करना है वो बैच में लेस देन 40 स्टूडेंट्स होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप। लेस देन 40 स्टूडेंट्स होना चाहिए। और तुम्हारा जो डाउट है 1 to 1 क्लियर करना चाहिए। बैठा देते हैं 1 to 1, बोलते हैं 9 में था, 10 में था, 11 में था, वो सब कुछ नहीं है। प्रिपरेशन खुद बनाओ, खुद जाके माइलस्टोन गाड़ के आओ। ओके, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चंस जो है मेरा, पहला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो बोल रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय √13। इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉस इनवर्स जो बाहर है मेरे को अंदर एक कॉस इनवर्स का वैल्यू कॉस एक्स टाइप का बनाना है। सो 3/√13 इंटू साइन एक्स। तो अभी मैं इसको कॉस इनवर्स, मेरे को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लाऊंगा।
तो मैं इसको ले जाता हूं, अभी क्या करूंगा कि लेट कॉस अल्फा इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 13। तो साइन अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा होगा 1 - 4/13 का रूट ओवर, so it is 3/√13. Obviously 3 √13 is sine alpha, so we can plug this value cos alpha cos x minus sin alpha sin x. Okay, so total is cos inverse cos alpha plus x. Okay, so where and this cos alpha plus x for all alpha, alpha should be tan inverse 3 by 2. Okay, tan inverse 3 by 2. So cos inverse cos, it is y equal to alpha plus x. So then dy by dx equal to 1. Okay, it is the answer, matching answer is the A. Okay. सो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका स्ट्रैटेजी है, यहां पर -1 से 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटू डीएक्स प्लस -1 से 1 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1/2। बट इसको हम लोग कभी प्लॉग नहीं कर पाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ना, वो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और वो भी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इक्वेशंस एंड मॉडुलस फंक्शंस, जेई मेन और एडवांस के लिए इसको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इज द कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, इसका होना चाहिए। अभी हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो क्वेश्चंस है वो है आई शुड बी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन with respect to dx plus -1 से 1 x square -1/2 and cos inverse. This is cos inverse of this is with dx. अभी इसको मैं एक्सेस करता हूं बाय द सपोज टू बी, पहले इंटीग्रल टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, उसको मैं देखता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, उसको हम लोग देखते हैं। आज एक्स goes from -1 to 1, so x square plus 1/2 goes from 0 plus 1/2. What is that? That is the 1/2, and also this can be, when it is 1 plus 1/2, it is 3/2. Okay, 3/2. Then value of x square plus 1/2 greatest integer function, greatest integer changes from the point change at the points where x square plus 1/2 equal to 1, which is x square equal to 1/2, so x equal to plus minus 1 over √2. So now we have to plug this point again. Supposed to be
0, if 0 is less than equal to x square is less than 1 by 2, then 1 by 2 is less than equal to x square plus 1 by 2 is less than 1. So x square plus 1 by 2 greatest integral value is the lowest value. It should be 0. Then 1 by 2. Another point is that if 1 by 2 is less than equal to x square is less than equal to 1, then 1 is less than equal to x square plus 1 by 2 is less than equal to 1.5. So x square plus 1 by 2 greatest integral value must be 1. 1.5, it should be 1. So now this is half of the work should be done. Then another part is x square minus 1 by 2 greatest integer, जो कि cos inverse x के साथ है. आज x goes from -1 to 1, then x square minus 1 by 2 goes from 0 minus 1 by 2 equal to it is minus 1 by 2 to also 1 minus 1 by 2, it should be plus 1 by 2. Now the value of it is the most important part of this integration, definite integration. Then value of x square minus 1 by 2 greatest integer value changes at the points where x square minus 1 by 2 equal to 0, or which is x square equal to 1 by 2 and x equal to plus minus 1 by root 2 plus minus 1 by root 2. So therefore x square minus 1 by 2 greatest integral value should be minus 1. Okay, so that should be minus 1. Then also another part is that if 1 by 2 is less than equal to x square is less than equal to 1, then 0 is less than equal to x square minus 1 by 2 should be less than equal to 1 by 2. So x square minus 1 by 2 greatest integral value of this part also 0. Now we have to go for the integrals. So that is the I equal to I1 plus I2. Supposed to be I1 plus I2. What is my I1? I1 is the integration of -1 to 1 sine inverse 1 x square plus 1 by 2 into greatest integer value of this into dx. सो हम लोग उसका वैल्यू को अभी जहां पर इंटीग्रल पॉइंट्स आएगा हम लोग वहां पर उसको एक्सेस करना शुरू करेंगे. I1. So it should be 2 times by using this King's rule. Okay. So integration of 0 to 1 by root 2. So sine inverse 0 into dx, sine inverse 0 into dx plus 1 by root 2, 1 by root 2 to integration of 1 sine inverse 1 into dx. So now it should be 2 times of 0 plus sine inverse 1, it is pi by 2. So pi by 2 into x value is
it is 1 by root 2 to 1. So it is 2 into pi by 2 whole into 1 minus 1 by root. So this is the first part answer. So 2 to cancel. So it is pi whole into 1 minus 1 by root 2. Okay. So this is the equation 1, means it is answer 1. So then we have to go for the second integral. Okay. So second integral should be I2 equal to integration of 2 times 0 to 1 by root 2. इट इज -1 to 1 कर देंगे तो चलेगा, नहीं तो 2 टाइम्स डायरेक्ट लिख देंगे चलेगा. सो कॉस इनवर्स इट शुड बी -1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root 2 to 1 cos inverse it should be 0 into dx supposed to be. So this is 2 times of, so I2 equal to times of pi x of 0 to 1 by 2. So this one plus it is pi by 2x again, pi by 2x of 1 by root 2 to 1. So I2 equal to, so 2 whole into pi by root 2 plus pi by 2 whole into 1 minus 1 by root 2 total. Then it is 2 pi by root 2 plus pi minus pi by root 2. So it is also pi plus pi by 2 pi by root 2. So pi plus pi by, this is the first part. Okay, second part. Then we have to go for the addition of the two integrations. So we get I1 plus I2. So I equal to, I1 plus I2. So it is should be pi minus pi by root 2 plus pi by root 2. So this answer should be 2 pi. So this answer should be B. Okay. So this is the answer B for the second questions. Okay. So 1 and 2. And for the C number, so what is my question of the C? So it is minus root 3 to plus root 3. Okay, this is minus root 3 to plus root 3 dx divided by 1 plus x square whole into 1 plus e raised to the power sin x. सो यहाँ पर एक फॉर्मूला में डाल रहा हूं किंग्स रूल को, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 times of 0 to a f of x dx also it can be set. So now minus root 3 से root 3. सो यहाँ पर हम लोग 2i ऐड करेंगे. सो 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो हम लोगों का क्या होगा ना, 0 to root 3 dx by 1 plus x square which equal to tan inverse x हो जाएगा, जो कि 0 से root 3 है. तो tan inverse root 3 it is 60 degree, means it is pi by 3. Okay, so this is the third number question C. Okay, and last number D number answer, or the fourth number, it is 0 to 6 pi, 0 to 6 pi sin inverse sin x into dx. हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई है.
So integration of 0 to 2 pi, 3 should be kept here. So sin inverse sin x. So इसका वैल्यू इज 0 है. ओके. सो हम लोग इसमें से मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को टारगेट करके आए हैं, और इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. एडवांस मोस्टली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत करीब आ रहा है एग्जाम. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उसमें 2.5 लाख को मतलब एडवांस लिखने के लिए टिकट मिलता है. तो मैं एक बात बोलता हूँ, हर कोई एग्जामिनेशन का नेचर है, चाहे जितना भी टफ क्वेश्चंस बन जाए, बट 35% क्वेश्चन शुड बी इजी, 35% क्वेश्चन शुड बी डूएबल, एंड नेक्स्ट 30% इज द डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर द टॉपर्स. टॉपर का जो सिलेक्शन का लिस्ट होता है उसमें से 30% आता है, और सिलेक्शन प्रोसेस में 35% जाता है, और मिडिल ऑर्डर जितना रैंकिंग है वो सब और 35% मतलब 70% के अंदर चला जाता है. तो आई होप एवरी वन शुड अंडरस्टैंड और लाइक दिस क्वेश्चन. एंड अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल्स. थैंक यू.